Yes, we are good to go now. Welcome to the 90 plus 1 show. This is Jabad, your host, and joining me my dear friend Mr. Sazil, जो कि एक बार्सिलोना फैन है, जिनकी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं apparently. So bro, कोई क्या कहना चाहते हो अपने बारे में? मेरे ही जिंदगी में तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे जब तक वो रेड कार्ड मर्चेंट मेरी टीम में मैं क्या बोलूं। मैं जब भी खुश होता हूँ मेरी जिंदगी में 2 मिनट का सुख नहीं रहता उसकी वजह से। क्या उस आ, प्राणी का नाम बता सकते हो? नहीं, उसको ऑनलाइन बहुत हेट मिल चुका है तो अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ उसका नाम उसके नाम में भी रोनाल्ड है। Hmm. Yeah, jokes aside, guys. So this is my channel 90 plus 1. जहाँ पे फुटबॉल की ढेर सारी बातें करेंगे. Everything we'll analyze, we'll record reviews, previews, transfer rumors, and along with me, I'll always have my dear friend Sazil with me. So hope you guys like this. So today we gonna talk about the game that is coming tomorrow. जो कल का मैच होगा Chelsea versus Arsenal, a potential title decider. Is it, my bro? If Chelsea wins it, then yes, it all comes down to the result actually. If If not, Chelsea then I wins it. think Arsenal will have a far too big of a lead. Though they are a bottler, they are a bunch of bottlers, but this time they look different. Is this the finally the year? क्या ये वो समय आ गया है कि आर्सेनल को अपना ये बोतल वाला टैग हटाने का समय आ गया? क्या लगता है? They should have succeeded long ago, but sadly they didn't. But this is this is a golden opportunity in my eyes. उनका सबसे बड़ा कंपटीशन जो इस सीजन की शुरुआत में था लिवरपूल, दे हैव गॉन completely आउट ऑफ ट्रैक। मैन सिटी आज भी काफी स्ट्रगल की है लीड्स के अगेंस्ट। और करेक्ट करेक्ट। चेल्सी चेल्सी का डिफेंस इज नेवर रियल लेवल। आप हम्म, 1-2 लाते हैं, फिर अचानक से संडरलैंड आके आपको 3 गोल मार के चली जाती है। दो गोल ब्रो. सॉरी, 2 गोल। अच्छा, 2-1 हारे थे ये, सॉरी। बट विल गेट टू एंड चेल्सी, विल गेट टू आर्सेनल. या जस्ट थोड़ा बता देता हूँ जो भी आवर व्यूअर्स कि विल गोइंग टू टॉक अबाउट कल का मैच चेल्सी और आर्सेनल का. अभी जो मैचेस हुए हैं रिसेंट, बारसा और अलावेस का, मैन सिटी लीड्स का, सनडरलैंड बोरमाउंट का, और जो यूसीएल में फिक्चर्स हुए हैं उनके भी बात करेंगे. और लिवरपूल का फॉर्म, मैन यूनाइटेड का वो अपॉर्चुनिटी मिस करना टू गो अहेड अगेंस्ट एवर्टन, 10 मैन एवर्टन अपेरेंटली. तो ये सब डिस्कस करेंगे. सो पहला टॉपिक, टू द मेन टॉपिक में जंप करते हैं. आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बाय स्क्रीन. सो लेट्स गो टू द चेल्सी वर्सेस आर्सेनल मैच जो होने वाला है कल 10 बजे इंडियन टाइम. तो इफ यू कैन सी, सो ब्रो, व्हाट आर योर थॉट्स, लाइक इनिशियल थॉट क्या है इस मैच, इस फिक्चर्स को देख के जो अभी कल होने वाला है? इट ऑल कम्स डाउन टू द बैटल ऑफ द मिडफील्ड एक्चुअली, कि कैसे ज़ुबामेंडी और डिक्लन राइस की मिडफील्ड को काउंटर करेंगी चेल्सी की काइसेडो और एंजो फर्नांडिस का डुओ। सो और बेसिकली, वो जो डुअल जीतेगा वही मेरे हिसाब से उस मैच को एक्चुअली में जीतने के सबसे काबिल बनना चाहिए। सो एक एक प्लेयर के ऊपर आएंगे अभी. अगर इफ यू कैन सी माय लाइन, द लाइनअप ऑफ द टू टीम्स फ्रॉम द लास्ट टू गेम्स, you can see, right? हम्म, So या so कैन यू शेयर basically द what, स्क्रीन? yes, I'm sharing. So
दिस इज द मैच गाइस, चेल्सी वर्सेस आर्सेनल टुमारो 10 बजे। और ये जो लाइनअप देख रहे हो, ये पिछला यूसीएल मैचेस दोनों के लाइनअप है। तो पिछला मैचेस के लाइनअप है। तो अकॉर्डिंग टू साजिल, इट इज बैटल ऑफ द मिडफील्ड, राइट? कि कैसे काइसो ये एंजो जुबिमेंडी राइस का डुओ और एक राइट, दूसरे पर और भारी पड़ेगा कि नहीं। जिस फॉर्म में एजे है उसको भी आप भूल नहीं सकते। एग्जैक्टली exactly, क्या मतलब, पहले आर्सेनल में बात करते कि एज ए टीम, हाउ डू यू सी दिस आर्सेनल टीम, लाइक एज ए टीम, लाइक आर दे कंप्लीट नाउ, आर दे द बेस्ट टीम इन द यूरोप नाउ? ऑन पेपर यस, मुझे इनसे ज्यादा बैलेंस स्क्वाड, इनसे ज्यादा डीप स्क्वाड किसी का नहीं देखता है। आप अभी भी अपने कुछ की प्लेयर्स को मिस कर रहे हैं एंड लिटरली आपकी परफॉर्मेंस उस तरफ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जिसका मतलब है कि आपका स्क्वाड बहुत डीप है। आपकी मेन टीम का एग्जैक्टली ब्रो। मेन मेन डिफेंडर गैब्रियल मैगलाइस इज बीन इंजर्ड। आपका विक्टर gyökeres पे आपने इतना पैसा खर्च किया, ही इज नॉट अवेलेबल। जीसस इज नॉट देयर। Kai Havertz, though I don't think so he can replace anyone on this team right now, but still he is a good player at least. He was actually like balancing the team last season, right? जब Yeah, when it's needed and all. So like, what do you think? Like, गैब्रियल का कमी महसूस होने ही नहीं दिया पिछले 2 गेम में आर्सेनल की टीम ने। डू यू थिंक? एब्सोल्युटली, मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगा कि आप अपनी टीम का मेन डिफेंडर मिस कर रहे हैं, जिस तरह आपने मतलब अपनी सेट पीसेस को प्रॉब्लम में नहीं आने दिया। लाइक गैब्रियल वाज द बिगेस्ट थ्रेट फ्रॉम सेट पीसेस किसी भी टीम के लिए, बट अगेंस्ट बायर्न जो हुआ उसके बाद से यू हैव टू एडमिट कि they are not missing Gabriel as much as people thought they would. यस यस यस, दैट इज माय थॉट ऑल्सो कि लास्ट 2 गेम पे ऐसा लगा नहीं कि उनके डिफेंस में कोई भी इफेक्ट आया है। सेट पीस में भी बोलो या फिर प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक बोलो या फिर डिफेंडिंग, जो वो डिफेंड करते हैं एकदम एज ए यूनिट, पूरा स्क्वीज कर दिया बायर्न को पिछले गेम में। और बायर्न का जो गोल भी और आया था, वो एक लॉन्ग बॉल से आया था, डायगोनल balls लॉन्ग बॉल से। वही बोल रहा व्हाट ब्रो? हूँ, long balls. Of course, यस, लॉन्ग uh, बॉल्स। talking about the long balls. अब अगर मैं बोलूँ कि चेल्सी भी लॉन्ग बॉल डाले बायर्न को देख के, लेकिन वो डालने वाला प्लेयर तुम्हें कौन लगता है चेल्सी से? मुझे कोई सेंटर बैक तो अपना जो लॉन्ग बॉल डाल सकता है कोई लग नहीं रहा है। Chalobah cannot do that long ball, though he's a good defender. Fofana is a very complete defender, but long ball, I don't think so. Colwill था जो डाल सकता था, he is out for the season. So अगर ये just for the sake of the video, I'm just asking you, तुम्हें कोई लगता है from the defense तो नहीं, at least from midfield who can circulate those long ball? Maybe Enzo, you काइसेडो think? तो एंजो को, लेकिन इफ यू प्ले एंजो डीप इन द इन डिफेंस, उसका जो मेन इफेक्टिवनेस वो खत्म हो जाएगा। Exactly. But एंड there is a rumor, or एंड it's a, not काइसेडो दो rumor actually, Enzo Maresca. Yes, yes. Continue, bro. Continue. so I'm saying कि दो काइसेडो, though brilliant at defending the ball and keeping the ball, I don't think so. He's that kind of a player who can give you pinpoint long balls. Exactly, Can exactly. do you think But Reece he is a James good can do it? distributor. Yeah, but James, as मैं I उसी think में आ रहा था. Bayern lack no, like Bayern has many good distributors, but Arsenal shut them down. Exactly. It was Kimmich who put the long ball. It was Kimmich actually. और मुझे लगता है वो
वो बस थोड़ा-सा 2 सेकंड के लिए स्विच ऑफ हो गई थी आर्सेनल, वो होगा नहीं पूरे मैच में। तो वही लॉन्ग बॉल से भी हराना मुश्किल इस तो होगा। That's the thing I have said for past few days. इस आर्सेनल को अगर आपको लिटरली करना है तो you have to be very precise in your counter attacks. हुँ, करेक्ट, करेक्ट। बट वो स्पेसेस भी कहाँ छोड़ते हैं काउंटर अटैक के लिए। उनका जो ट्रैक बैक होता है, टिम्बर हो गया, साका हो गया, वहाँ से कैलिफिरी, नोनी माडुएके आता है कभी, मार्टिनेली भी ट्रैक बैक करता है। तो इसे लाइक वो लोग स्पेस नहीं छोड़ते ब्रो। तो काउंटर भी इट विल नॉट बी ईज़ी। Of course, it's Arsenal we are talking about. कैन यू इमेजिन वी आर कहीं ना टॉकिंग कहीं, अबाउट आर्सेनल? of course, that's the main point. लाइक आई एम अ चेल्सी फैन, मुझे बुरा लग रहा है बट आई हैव टू एडमिट इट कि एट द मोमेंट And I think दे आर द बेस्ट टीम इन Arteta यूरोप। got frustrated with the haram ball memes. This season, they haven't अरे यार just कमिंग टू won, they दैट have हराम destroyed. बोल जो ह वही, वही मैं उसी में आ रहा हूँ कि जो हराम बोल बोल रहे थे लोग सीज़न के शुरुआत में, मुझे नहीं पता कि एक भी मैच में उन लोग ने हराम बोल खेला। अगर ऐसा हराम बोल होता है तो भाई आई एम ऑल फॉर इट। That's exactly the thing. मुझे लग रहा है सो कि व्हाट डू यू थिंक ब्रो? कहीं ना कहीं आर्टेटा ने वो देख ही लिया है, क्या कहते हैं आप, haram ball memes, and he is just frustrated now. एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो बट उनका जो कैप्टन था लास्ट सीजन तक और जो प्रीटी मच मेन प्लेयर था अपार्ट फ्रॉम साका, ऑब्वियसली साका इज देयर स्टार बॉय, इज अ मार्की प्लेयर, बट ओडेगार्ड जिसको अभी कोई मतलब I don't think anyone miss him because of Eze. So how good of a player is Eze in this Arsenal team? We know he's a good player. That's why they signed him. That's why Europe was उसके पीछे था. लेकिन in Arsenal this Arteta का टीम में how good is he? He can play in left, he can play in right, but he's playing as a number 10. और And I टॉटनम think में that has हैट्रिक brought the best मारा. version of Eze. Aze's Correct, correct. passing ability and like what you call a whole player, he finds the gaps very easily where he can sit and follow the game and suddenly appear to score the goal. That's exactly what he did against Tottenham. वो खोल दिया था ब्रो, दो तीन मतलब ऐसे ऐसे गोल आए उसके कि एकदम मतलब कुछ पता ही नहीं लगने दिया कि किस तरफ गोल जाएगा, किस तरफ मतलब वही बेसिकली ये मैं एकदम मतलब डेंजर होगी जो मतलब हम I लोग was बोल रहे थे very कि impressed. बहुत इम्प्रेस हुआ था मैं तो। लेकिन ब्रो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, मुझे एक चीज इस लेआउट में इस गेम में खटक रही है कि द इफ यू कैन सी द रेफरी एंटनी टेलर, ब्रो वो हमेशा हमेशा सेंटर स्टेज ले जाता है किसी भी बिग गेम में। वो बंदा खेलता ही लेकिन आई अपने होप लिए दिस है, टाइम तो इज नॉट द केस। मतलब रेफरी खुद के लिए करता है वो। सो रैपिंग अप ऑन आर्सेनल, so do you agree or like of course we already speak about it, but at this current time, at this moment we speak, they are the best team in Europe and they are the team to defeat. Of course. What's your thought on this point? I have considered Arsenal the best squad on paper for the last 2.5 years. I always was a bit Okay, like critical about Arteta and his managerial career, but this year run. I think so he has, yeah, this year he has improved a lot as a manager, and I Okay, so we both agree it's their title to lose that now. Arsenal is
the team to beat. Indeed, Yeah, it's their whether it's title to lose, your correct. And we both agree. indeed, and there's Go on, go like on. people might compare me. One thing which I would like to add, like last year, people are comparing this Arsenal to last year's Liverpool, which on the surface I will say is a fair comparison. But when you actually look, Okay. that that Liverpool only had one attacking threat, and his name was Mohamed Salah. And this Arsenal team is not the same. Yes. This Arsenal team is not dependent on a Hmm. single man to do all the heavy lifting in the attack. You can take out Yeah, this is a Bukayo Saka. unit performing, right? Yeah, exactly. You can take Bukayo Saka out, and you will see a very slight drop in their attacking potential. Hmm. Correct, correct. This वही squad मतलब on paper, साका को हटा this के squad on paper can do a three-peat in UCL and Premier League at the same time. They have that kind of talent. that's a big statement, but it's reasonable, it's believable. So Looking at wrap paper, him but that's the up thing. on UCL is Arsenal. not played on paper. UCL is a different. I think UCL is anyone's in the top eight. Whoever will be in the top eight, anyone can win UCL on After those last top year, eight. it's not even Even not top eight in my eyes. if yeah, even those last year PSG top eight में भी नहीं थी, playoff खेल के आई थी. Even they They weren't. also They win the on the UCL. verge So of getting out of knockout stages. It has been एग्जैक्टली just एग्जैक्ट amazing. यूसीएल तो नॉकआउट है भाई. नॉकआउट में कुछ भी वन ऑफ गेम में कुछ भी कोई भी कर लेगा ब्रो. लेकिन प्रीमियर लीग इज आर्सेनल टाइटल टू लूज अभी तक. द जैसे कि लिवरपूल और सिटी खेल रही है. लेकिन देयर इज वन मोर टीम, इफ आई मे से, जो इस पूरे सीजन में एज ए डिसरप्टर की काम कर सकती है और कर रही है, और मे बी दे विल बी ऑल्सो इन टाइटल रेस, is their opponent tomorrow, Chelsea. So मुझे one लगा question तुम to मैन you, यूनाइटेड bro. बोलने वाले हो। वैसे जोक मैं रात के 11 बजे नहीं करता ब्रो. So one question to you, bro. From Mhm, the Club World Cup, how mhm. do you rate this Chelsea team and the manager? Sometimes I really don't get the demand of Chelsea fans of firing Enzo Maresca. He has done a wonderful job. And Okay. the biggest weakness in my eyes for Chelsea is that experience on the pitch. Nobody there is like a player with 15 years of experience who can calm down the kids. So when Chelsea gets under pressure, they most of the time just lose it in the flow. Hmm. But if not for that, I don't. This is a very solid side. You have good, good attacking options, good second attacking options. Though yes, I agree they still haven't found their striker for the future. But their attacking, other attacking options are very good. You have a brilliant midfield of Caicedo, Enzo, and Reece James, and even in the absence of Colville, I think Fofana has stepped up. The only main problem is you don't have any substitute center backs. So when your center backs are tired and someone like Tosin comes in, Chelsea loses it. Okay. Chelsea loses that. Yeah, of course, bro. That what I also believe. I'm a Chelsea fan, but after that Conference League win, I feel something has changed in this club. That mentality came.
जो कि उसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन अभी जो इस गेम के बारे में जो कल होने वाला है चेल्सी वर्सेस आर्सेनल में, और जो रिसेंटली चेल्सी ने बार्सिलोना के अगेंस्ट जो शो पुट अप किया है, उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए, लाइक डू यू थिंक देयर इज इवन ए चांस फॉर चेल्सी टू विन दिस गेम? And Chelsea is a squad which knows how to surprise everyone. So you can never underestimate that squad. Just take a look at Club World Cup final. Nobody gave them a chance going in, but they not only they won, they dominated like anything. That's Chelsea for you. So as I said, it all comes down to the battle of the midfield. Zubimendi, Declan Rice, and Eze versus Fernandes, Caicedo, and James, and Correct, whosoever correct, comes correct. at top. And if Palmer, let's see if Palmer gets few minutes. If I heard it right, and I didn't watch it, but people were saying Maresca in the press conference said that Palmer is ready to start also, but I don't think he should start because he's coming from No, injury. no, he shouldn't But actually. but They yes, should play exactly. it safe. And if I think if like if you put someone like Palmer at in the 70th minute and the game is tied or just a one goal lead, he So can the make game that complexion will final change, impact. right? Yeah, yeah, he can make that impact. So I think Chelsea needs to just stay put and at least be there till Palmer is in in the game. Correct, correct, bro. So that's for the Palmer. But do you think there is a wonder kid in our team? His name is Of course, Estevao. Do you think he will give any he impact in is this game? brilliant. The way Calafiori has been playing recently, it's gonna be hard, of course. There is no doubt. And Zubamendi knows how to shut down even the best of players. So it's not gonna be as easy as the Barca's high line. But Exactly. I don't think there will be high line like Barca in any of the game. yeah, Barca is a special that's the team. thing. So that is the case, I think. Though I truly believe Estevao has that kind of potential that he can dominate even against a team like Arsenal. Coming to that, like as Estevao as a player, like how Hmm. good is he in your eyes? Hmm. Like I have pretty high hopes. He, like when Vinicius came in, like just taking an example, Vinicius wasn't Okay, okay, even close to this good. If you remember back in the days, even Benzema was frustrated with him. bro. Yes, yes, that we all know the stories, the press conference. Yeah, so but like the way he improved, so of Mm-hmm. course you have to give Estevao that those chances. And one thing in favor of Estevao is his personality and how he handles himself. Oh, yeah. बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है. वही मेन चीज है जैसे कि लमीन यमाल है वो कभी कभी फ्लो के साथ बह जाता है वो भाई उसको बोलो स्टोरी ना डाले, बाकी सब सही है. स्टोरी में डाले मेरी बात सुने तो सबसे पहले अपने पिताजी से दूर रहेगा उसके उसके पिताजी कौन सा घमंड है भाई पता नहीं उसके पिताजी क्या सोचते हैं मतलब अब बार्सिलोना से गुस्सा है क्या क्योंकि करे ब्रो. अगर अगर रिपोर्ट्स की बात मानो तो ही वाज एंग्री विद बार्सिलोना फॉर नॉट सपोर्टिंग लमीन यमाल इनफ इन बैलन डॉर भाई तो आप लमीन shouldn't have wasn't भाई even तुमने has the रफीनिया को साइडलाइन कर लिया. हाँ वही बोलना उससे ज्यादा क्या सपोर्ट दोगे तुम लकीन यमाल को रफीने शुड हैव बीन एंग्री बट रफीनिया वो बंदा क्या बंदा है शांत खड़ा था भाई वो दिल को छूने वाला बंदा है ब्रो.
वही मैं बोल रहा हूँ. ही इज ए मैन, लाइक क्या बोलूं दैट्स भाई। व्हाई I'm actually चेल्सी वाले happy गेम for में भी वो कि इंजरी से आने के बाद भी उसने सबसे अच्छा। जो लेट लेट गेम में थोड़ा बोलो सा बोलो। स्पार्क दिखा था, it was all because of Rafinha. And that's why I'm actually a bit happy for Ottawa एग्जैक्टली as मैं well. वही बोल रहा He will have a like a person like Rafinha in his national team to look. हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। So I just hope he doesn't take from Vinicius. He takes it from Rafinha. Exactly. But in this game, bro, in this game, in this lineup for Chelsea, I think this man, Caicedo, will be the key for win or lose. So do you agree with me first of all? And if you do, थोड़ा बता सकते हो क्यों, like Caicedo is obviously we know how good of a player he is, but in this game, Mm, what will be his role? mm. It all comes down to how he handles as a like Exactly, made up if my you point. if you look at Marino as a center forward, he does not he's not that lurking type of center back like Haaland, who just waits for the bait to come in and he just matches it. He quite often drops quite deep and lets the wingers actually take it. वो फिर वो So, मिडफील्ड में नंबर्स बढ़ा देता है मरीनियो। huh, so if Caicedo is able to neutralize as a, then I think it will become quite easier actually, not easy, easier for Chelsea to actually defend. एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेरा भी वही था कि काइसेडो को एजे को तो भले किसी को मार्क करे ना करे रोके ना रोके एजे को उसको डिस्पोजेस करना पड़ेगा नहीं तो पूरा गेम वहाँ एजे और राइस वही मैं सोचा किसके ऊपर जाएगा वो दैट इज ए टेक्टिकल थिंग विल डिस्कस दैट इन सम अदर वीडियो और समथिंग बट coming to the Chelsea squad only, Cucurella का performance against Saka and Timber और उसको अगर garnacho या फिर गिटेंस यहाँ खेला या फिर नेटो मुझे लग रहा है लियाम डेलाप स्ट्राइकर आ जाएगा और नेटो को ये लोग या लेफ्ट में खिला देंगे तो नेटो को भी ट्रैक बैक उतना ही जरूरी हो जाएगा तो डू यू थिंक दिस कुकुरेया कैन स्टॉप द डू ऑफ साका एंड टिम्बर On the surface, yes, he can, but is it gonna be easy? The हाउ डू answer यू is no. It रेट all comes down to उसको किस हिसाब का सपोर्ट मिलेगा उसी पे डिपेंड करता है. Like against Barca, he was getting great support from Caicedo and he was able to utilize Lamine Yamal, who's like, let's be honest, he's actually better than Saka at nearly everything, and he was able to shut down him. So I see no problem. But if Eze plays his game दिस and he gets Caicedo involved somewhere else, then I see Saka giving a lot of trouble to Chelsea and Cucurella. Cucurella. करेक्ट 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 कुकुरे को सपोर्ट बहुत अच्छा मिला था कैसेडो से क्योंकि मेरे ख्याल से तो मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट थी बारसा वाले गेम में मतलब डियोंग वाज फिलहाल नॉट कोई अप हिल टू भी द नहीं रहा था. मार्क एग्जैक्टली तो उसको कैसेडो वाज उसको अ बिट फ्री उसको कोई जरूरत एग्जैक्टली बाकी तो चेल्सी के टीम में सब परफॉर्म कर ही लेते मतलब ऑन एन एवरेज बस ये दो तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है कैसेडो हो गया कुकुरेया हो गया रीस जेम भी एंजो भी टू जब जब चेल्सी के पास बॉल रखने का टाइम आएगा तब एंजो इम्पोर्टेंट हो जाएगा सर सर्कुलेट करने के लिए ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो मतलब बॉल को मिडफील्ड मतलब डिफेंस से मिडफील्ड मिडफील्ड से अटैक में कनेक्ट करता है तो ही इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एवरीवन इज इम्पोर्टेंट बट मुझे लग रहा है काइसेडो कुकुरेया एंड अगर पार्मा स्टार्ट किया पार्मा या फिर एस्तेवाओ इन लोगों को अपना टॉप गेम में होना पड़ेगा टू बीट दिस बिग आर्सेनल टीम फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू
I see no wrongs there. I actually agree with you here. डिफेंस तो मैं बोलूंगा नहीं चेल्सी का डिफेंस इज द अगर इस चेल्सी में कुछ कमियां हैं तो वो डिफेंस ही डिफेंस है तो फिर भी व्हाट वी आर डूइंग हाउ वी आर प्लेइंग इट मैं अपलोड करता हूँ आवर मैनेजर लाइक दैट कम्स टू माय नेक्स्ट पॉइंट दैट हाउ डू यू रेट एंजो मरेस्का इन दिस 18 months जो उसने चेल्सी के साथ किया है People don't give him enough credit, I will say that. स्ट्रेट To टू द control पॉइंट a माय locker, फ्रेंड yeah, if a locker room without any experienced player, like a player who has 10, 15 years of experience under his belt, it's not easy to control करेक्ट him, करेक्ट but he has done a wonderful job. And to be honest, like, of course, there will be few blunders like he did against Manchester United, where after the red card, he panicked. That is the best word, where he panicked. And same can be said against the match against Brighton. आई स्टिल But बिलीव aside, कि Mhm. यस 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 नो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से जो मैं बोलने वाला था कि एवरी मैनेजर एवरीवन इज लर्निंग इन देयर लाइफ even managers are in learning curve every day but I see Mariska evolving each time Yeah, so that is the like beauty. हर His गेम से कुछ ना कुछ वो in सीखता है in-game tactical tweaks are brilliant, actually. Like if you हम्म look at the match against Sunderland, which I think will be the best example in this case, you can literally see Tosin marking a man who has the ball, and instead of just going for the ball, he's just standing there, which actually gave Sunderland enough time to come and hit the winner. Other players. Now, what are you expecting Mariska to do there? He can't go there, shout at Tosin Sears that go for the ball. He can भाई just वहां तो go टोसिन तो मेरे को लग sideline. रहा था कि That's exactly एग्जैक्टली my और वहां point. टोसिन की तो गलती मैं मानता हूँ Uh, uh, कोई uh, uh, इन एनी क्लब ब्रो ऐसी सिचुएशन प्लेयर में की मैनेजर गलती को सकते हो. This is the एग्जैक्ट अराओ entire का गलती में reason तुम क्या बोल I सकते हो have फ्लिक को ब्रो वही तो मेरा पॉइंट है लाइक दैट्स द एग्जैक्ट रीजन मैं कैमरन को लेकर उतना क्रिटिकल नहीं हूँ तो इज ही स्टबर्न यस उसके प्लेयर चूतिए हैं उसका भी आंसर यस है लाइक एग्जैक्टली लिटरली मैं एवर्टन वाले मैचेस में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन थे तुम्हारे पास करने को लेकिन कोई बंदा थ्रू बॉल डालने को तैयार ही नहीं है नहीं ब्रो लेकिन नो नो बट आई एम ब्लेमिंग आमोरिम ऑफ टॉपिक बात जा रही है लेकिन आई विल से दिस दैट एवर्टन गेम में वो नहीं एक वी हैव डिफेंडर टू तो हटा डिस्कस सकता था ब्रो अबाउट फास्ट यूनाइटेड एज डिफेंडर्स वेल के yeah, we'll discuss today in a brief but that was just my opinion so coming back to the topic and we want to wrap it this game wrap up this Chelsea versus Arsenal so on paper on every form everything but Arsenal has the edge ये मैं मानता हूँ I think you will also agree and यस if there any chance Chelsea to beat is to disrupt that midfield and crack the defense और अगर चेल्सी जीत जाती है तो क्या टाइटल रेस ऑन है अगर चेल्सी विंस इट देन यस इफ इट्स अ ड्रॉ देन I think it might bring up a slight bump, but still Arsenal will be in the driving seat. And if Arsenal wins this, then I don't see a लेकिन title race. लेकिन ब्रो एक चीज ऐड करना चाहता हूँ एज अ चेल्सी फैन Mhm, मतलब हाउ आई सी दिस गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट गेम ऑब्वियसली बट आई लाइक मुझे लॉस से कुछ इफेक्ट नहीं होगा लाइक आई विल टेक इट स्पोर्टिंगली दिस लॉस एंड मतलब व्हाट वी कैन डू बट परफॉर्मेंस आई वांट टू सी द परफॉर्मेंस दैट we put against Barca we put against mhm. last 2-3 game जहाँ हम लोग जीत रहे थे तो वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा of course I want to win we want to win for the title also but
मतलब I will accept defeat. If we lose, I will accept it gracefully. But एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि it is very early in the season though to say about title Mhm. also. Do you think that? Uh, how many match we have हो चुके हैं अभी तक match? अभी One third of the डेज season is तो gone. मुझे लग रहा है It's not. I don't think it's 15 या actually early 12 now. 13 हो चुके हैं. I just checked. 13 13 So या ओके या सो वही अभी हाफ one द third of the सीजन season भी is नहीं हुआ gone. है. But one third of the season is actually good enough to tell you how good our team is. Exactly, Can exactly. you That is can true, you and we decide can the say title for right other now? The team also. answer is no. Yeah, असली टाइटल रेस मेरे हिसाब से Exactly. शुरू होगी विंटर ट्रांसफर विंडो के बाद when you have actually no way to improve other than your players stepping up. Mm, correct, correct, correct. So, last point of this match, if you can give me a prediction in goals. Okay. Uh, 2-0 Arsenal. 2-0 Arsenal. Wow. Mm, I will say This it was will the be Arsenal of last very year. I would have gone for 1-0, but this Arsenal is a bit quite different actually. They do not I sit have back after the lead. exactly. I have two prediction actually, and I'm going to say both. Like my brain is saying, it will be a 2-1 or 3-1 Arsenal, even though I'm a Chelsea fan. But hear me out. It is my Mhm, brain saying, but I think this game is a draw, classic Premier League draw, 2-2. mhm. So, yeah, guys. So that is the our takes on this game, Chelsea versus Arsenal, potential title race. Are Chelsea in title race after this? So yeah, that's it. So quickly we will go through the other two three teams in the Premier League. We have less time right now. So quick thoughts on Liverpool, bro. That's a tricky one. On paper, I think no team in Europe has a better starting 11 than this. But Liverpool is the example that trophies aren't fun on paper. Like when I look when I watch a Liverpool match, I literally every player being clueless of what are they supposed to do. Mm, correct, correct. And I also think Van Dijk has fallen off so much. I can't even believe that dip volleyball, dip तो basketball, आया. whatever he was playing against. It isn't even a dip. भाई डिप होता है जब तुम थोड़ा सा खराब खेल लो जो तुमने पीएसवी के अगेंस्ट हैंडबॉल किया उसे डिप नहीं कहा जाता तो वहां लिटरली वॉलीबॉल खेल लेते कि बास्केटबॉल मुझे खुद नहीं पता और Dunk, dunk. अरबिक अरब कमेंटेटर्स ने जो मजाक बनाया था वैन डाइक वॉलीबॉल अरे भाई अरे नहीं ब्रो आजकल तो मीम बन रहा है कि वैन डाइक इज देयर फॉर ट्वर्किंग apparently. So क्या ही बोले अब. Let's not go there. He's a very good player, but yeah. So my thought on Liverpool is shambolic till now, considering the money they have spent. If it was Chelsea, Arsenal, United, any other team, this much money is spent, and this is the performance. Even their players, media will be on their literally पीछे पड़ जाते. But I don't know. They are तो मतलब मीडिया में इतना बात नहीं हो रही. नहीं पर वो दिख रहा है ब्रो, सब दिख रहा है. People are and not fool. in सब दिख रहा है. Liverpool legends own words Jimmy Carragher once said leave football before football leaves you but Exactly, here is exactly. the big question do you sack Arne Slot Ooh, इसमें we will discuss. This is a topic. I think This is that is the only major question for Liverpool Arsenal at fans this right point now. in time. Yeah, sorry, Ex- Liverpool fans at this point in time. exactly, exactly. My point, my point.
We'll talk about this also. Uh, so that's all about Liverpool right now. Man City, Hmm. Man City. What your thought? Top four I निकाल think the देंगे. main problem, top four तो बहुत easy है, लेकिन main problem with Man City is that जैसे Haaland के अलावा they have no scoring option who is consistently giving you goals. वही वही कोई आउटलेट नहीं दिख रहा है हालैंड के अलावा टू स्कोर दोस गोल्स. कि Haaland has an off game, where do you find those goals? उनके साइनिंग भी उतने चले नहीं ब्रो जितना चलना चाहिए. मतलब लिवरपूल से तो ज्यादा चल ही रहे लेकिन उतने चले नहीं. अप नॉट अप टू द मार्क. वो चाहे, but लाइक Nico Gonzalez has been amazing. I have to give him that. सबसे मिसिंग मुझे राइंडर की फॉर्म लग रही है अभी. मतलब बहुत हाइप Grinder लेके has, आया था बंदा. yeah, and you have to talk about actually Phil Foden as well. जब वो, हम्म, जैसे कि वो कहावत है ना, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, that is Phil Foden right now. आज like today was his day and he was amazing. एग्जैक्टली And व्हाट अ गेम टुडे. when it's not his day, he मतलब he just गायब हो जाता है. कंसिस्टेंसी वही इज द बोले, की. जेरेमी डोकू का भी वही हाल है. बट लाइक इज अगेंस्ट, हालैंड के बाद हालैंड के बाद अगर मैं किसी को बोलूंगा इस टीम पे जो स्टेप अप कर रहा है वो डोकू ही है मेरे लिए एटलीस्ट वो इन द था ही, अटैकिंग सेंस. बट दैट इज ट्रू. लाइक इफ यू एक्चुअली लुक एट मैन सिटी, क्या कहते हो, द Nico Gonzalez hasn't let what is Man City miss Rodri that much. You have हाँ to agree वो तो on है. that. हाँ, वो तो है लाइक नॉट द इम्पैक्ट वाइज बट या मतलब लीकिंग गोल्स नहीं हो रहे जो पिछले सीजन होते थे. वही बोलना. And Bernardo Silva, like I don't even know what he's doing at this point in time. आई एग्री एंड Can you थोड़ा डर bring लग रहा है Bernardo मुझे. Silva on the screen once? नहीं उसी बात का डर On लग the रहा है मुझे screen. क्योंकि आई एम ए पोर्टुगल फैन आल्सो. बड़े भैया फैन. वर्ल्ड कप इज कमिंग सो we'll talk about that later in some episode but yeah so just a If you quick ask me one thing, yes yes everything in Portugal depends upon two people right now, three people to be honest. Nuno Mendes, Vitinha. Vitinha, and Jan Alves. These three are going to control your everything. Who's the third person you name? Jan Alves, Jordan. Jordan West. Yeah, game wise perspective, but I still think like I know bias bologe koi mere ko, but impact wise I think Ronaldo is still matters to this team. that I can see, but Ronaldo has yet to do anything in World Cup knockout matches. That is true. No, I'm just saying that जीत Mm, for the impact कहीं मैच फंसा हुआ है कहीं कुछ उस समय he's still the like come on Portugal's, bro. though people are saying Ronaldo should retire, I'm not on that side. He should be there. He deserves to be there. बट पोर्चुगल की सबसे बड़ी वीकनेस इज देयर राइट. राइट में कौन खेलेगा? They are right. वही बर्नार्डो खेलता दो, है अभी. डिफेंस में भी कौन खेलेगा ये भी देखना होगा. डिफेंस में आप अगर डायलो को खिला रहे हैं, आप डायलो को No नहीं way खिला bro. सकते वर्ल्ड कप No way. नॉकआउट्स में. कोई कोई अगर आपका ब्राजील से मैच हो गया, विनीसियस और रफीनिया में से कोई भी आएगा, वो उड़ाते हुए चला जाएगा. No way. No way. No way. फ्रांस में हो गया, डेम्बेले उड़ा देगा. आप कोई भी मेजर टीम के अगेंस्ट डायलो जैसे डिफेंडर को लेकर नहीं जीत सकते हैं. But I think लेट्स लीव पोर्चुगल असाइड फॉर नाउ. इट्स नॉट yes. द टाइम yet. Yeah, it's not our topic today. See, guys, we are just beginners in this platform and all. मतलब as a host, as a creator. So हम लोग परफेक्ट तो नहीं हो सकते. Obviously कोई होता नहीं है तो
जस्ट समझ लेना कि हम लोग ऑफ टॉपिक क्यों जाते बार बार. वी आर वेरी enthusiast about football, that's it. So yes bro, so coming to the समझ में last आता है उसके बारे में बात होने लगती है। yes, yes, exactly. So last two teams, बस थोड़ा सा quick answer दे देना. Do you see Tottenham in top four or do you see Man United in top four? And do you see both in top four or do you don't see them both in top four? To be honest, the way Emery has handled Aston Villa, if No, no. We Aston I will Villa say that doesn't get, no, no, no. Don't say about that like any other नहीं team नहीं, right now. I'll question you हाँ that sorry, but any dark horses. as a dark horses, of course, it is Aston Villa in my eyes. And if Aston Villa isn't doesn't get like absolutely wrecked by injuries, then I see them in top four instead of United and Tottenham. Even instead of Newcastle, you are saying. Yes, Okay, yeah, correct, correct. Newcastle Newcastle can have be dropped far too many points in the beginning of the tournament. Now catching up exactly is gonna be be very very hard. difficult team. Yeah. So, but coming to the question again, इन दोनों में से किसी एक को अगर डालना चाहोगे या फिर जो पहुंच सकता है तुम्हारे हिसाब से कौन होगा टॉटनहम और यूनाइटेड में Uh, और किसकी जगह People पहुंचेगा are gonna ऑफ laugh, कोर्स but I लिवरपूल am actually लिवरपूल के good. लिए तो चली गई टॉप फोर Of course, Liverpool should be there if they fix things out. Like, but if it's just between Tottenham and Man United, I see Man United because at least like people are gonna say no, laugh at Man United, but Tottenham's yes like dressing room is the problem, I think. I haven't heard any good things about their ऊपर से dressing room as of now. यस 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 And ऊपर से ब्रो uh, वो है and one very big advantage that United will have later on the season is not playing any European competition. यस एग्जैक्टली मैं When वही बोलने वाला था when ऊपर से Tottenham will play like playoffs and quarter round of 16 matches for UCL, United will have off weeks. एग्जैक्टली ब्रो वही बोलने वाला था मैं कि उनके पास वन वीक मतलब वन मैच पर वीक वाला सिस्टम हो गया उनके पास तो वही है तो मैं भी यूनाइटेड को देखता हूँ तो ठीक है तो मेरा वही बिग गेम टुमारो गाइस वी विल पोस्ट अगेन अबाउट इट द रिव्यू एंड ऑल एनालिसिस भी करेंगे हम लोग एनी एनालिटिक्स जो भी मरिस्का और आर्टेटा करेंगे फील्ड में तो कमिंग बैक टू द लास्ट टॉपिक मैन ऑफ द मैच कौन होगा अगर आर्सेनल जीतती है तो वहां से कौन होगा चेल्सी जीतती है तो वहां से कौन होगा ऐसे अर्ली ऐसे जस्ट फॉर फन In my eyes, both of their defensive midfielders, Supermendy or Caicedo. नॉट डेक्लन राइस No, करेक्ट मैं आई बिलीव दैट इज वेरी लाइक सही पॉइंट बोला तुमने cannot argue on this so let's wrap it out that's it for us guys so if any last word you have to say my bro जाते जाते थोड़ी सी हंसी के लिए मैन यूनाइटेड को भी टच कर लेते हैं. ठीक है anything you want to say oh the stage is yours What can be said? Like, uh, as they say, it's just clown show at this point in time. You play few games very well. Somehow you play so well that you convince people that you are actually serious. Like going into the Everton match, everyone, like even the biggest Amarim criticizers were like, this should be a winnable draw, especially after 10 minutes when you have 80 minutes against a 10-man team and you are unable to find the net a single time. What can be said? Like now it's clown show at both management level and playing level. management तो गया गुजरा है bro seriously Okay. So पर what do you have to say about Amorim as of now? 13 match days.
Three, though on paper he is just 3 points away from top four. ब्रो पहलू बहुत है इस जो टॉपिक तुमने अभी छेड़ दी ना, क्योंकि एज ए यूनाइटेड तुम अभी यूनाइटेड में रहे हो, लेट्स बी ऑनेस्ट, से बिग क्लब, वेरी बिग क्लब। उस पे तुम्हारा रिकॉर्ड जो है, कितने विन्स है टोटल, देखो तो कितने लॉस्ट है, इफ यू कैन सी टिल 12, नाउ। 12 wins in 12 months. हम्म, हाउ मेनी, 12 हाउ wins मेनी in विन्स? EPL in 12 months. 12 wins in EPL in 12 months. So you can see this is not a way to handle things in a club like United. Though the club is गया गुजरा हो गया अभी मैनेजमेंट साइड से, लेकिन फिर भी फैन बेस will accept, not accept, I mean this. So फैन बेस तो होता है ब्रो, रिएक्शनरी हर फैन बेस होता है, तुम्हारा कह लो मेरा कह लो, मतलब अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के। Big clubs, तो big clubs. बिग क्लब्स या बिग क्लब्स, तो वो तो है ही, बट तो वही है, लेकिन फिर मेरे को आर्सेनल का एग्जांपल भी आ जाता है कि ट्रस्ट भी कितना ज़रूरी है। वो जो ट्रस्ट द प्रोसेस का जो मीम बनता है, वो भी अभी उनका फल तो आ ही रहा है ना। जो भी कितना भी ट्रोल कर लो, हो तो रहा है, मतलब Hmm. रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, भले ही कुछ जीते नहीं अभी तक, प्रूफ तो नहीं किया अभी तक, लेकिन रिजल्ट्स तो है। तो वही है, लेकिन स्पेसिफिकली एवर्टन वाला गेम में बोले तो वो मैनेजर का गलती बोलूंगा मैं। प्लेयर तो है ही, प्लेयर की गलती में मैनेजर को नहीं कोस सकते हो, लेकिन मैनेजर का गलती भी था। तुम्हें अटैकिंग बहुत होना था, तुम एक डिफेंडर हटा सकते थे, एक एक्स्ट्रा अटैकर ला सकते थे। तुम कोबी मेनू ला रहे हो अटैक करने के लिए, वो कैसा सेंस बनता है मुझे पता नहीं चला। हाँ लेकिन तो बट यू हैव टू आल्सो लुक कि यूनाइटेड के पास बेंच भी तो नहीं है, तुम किसको लाते अगर कोबी माइनो को नहीं लाते तो। वो पुट एनी यंगस्टर, पुट एनीवन हु कैन नो 10% of attacking also, who can fill the box। वही तो मेन चीज है कि हम लोग जानते ही नहीं वैसे किसी प्लेयर के बारे में। तुम मैनेजर हो तो कोई तो होगा ब्रो, इट्स लाइक वो तो आई दैट डोंट, it doesn't sit well with me what Amorim did। I agree actually, but that is the biggest problem with United. Like on paper, with all their new signings, they are a very good squad, and they have showed that they defeated Chelsea, they defeated Liverpool, they drew against Tottenham with 10 men actually when they were down a man, and Exactly so they have shown character a lot this season. But ब्रो, मेरे लिए स्क्वाड but like as soon as बहुत अच्छा है। two or your three of your main squad players are gone, your team becomes hollow, suddenly very hollow. Like नो वही you मैं बोल take रहा the हूँ। best, you take out the best 11 of United, and when you look at the bench, you only see two options. One is Mason Mount, and the second is Ahmad Diar. I'm saying Ahmad. What? Sorry, Kobe Maino. Mason Mount is very good for a bench player, but is Kobe Maino that good? Let's not hype him as like अग्री, Rashford. अग्री टोटली अग्री, बट वही मेरा बात है ब्रो, लेकिन एज ए ओवरऑल स्क्वाड देखो, दे हैव दैट टू बी ए टॉप 40, but I don't think it will happen any soon, the way the club is run and the way things are going for them. So but Agree. anything can happen bro. The way Ratcliffe actually gave the answer that he's going to trust Amaran now, I think that Mm. might be the correct call. Like, I would have actually asked for Amaran to be kicked out, but looking at his tenure at Sporting, which started a bit similarly, Exactly. you have to look for things, and you have to actually look at what Amaran did in Europa League last season. Correct, correct. And if anyone watched the Europa League final, it was, and see, this is a very correct statement said by someone nice, that in the battle of clowns, the winner is always a clown. First of all, that goal of Tottenham should have never gone in. I don't know what That's the Onana was doing. let me just say that's the brilliance of
Onana. Onana the Great, of course. That shouldn't have been a goal. And then United actually got two to three good opportunities, very good actually. But of course, Garnacho being Garnacho, pulling up a, I don't know what, a rocket, them not being able to head in a ball which in a clear net. That's why Correct, bro. I still think like Amaram should at least get the entire year. And if they actually get a good midfielder in winter transfer window, then I actually see United improving quite a Uh, lot. if you ask me personally, this season he should stay and at least top six aa jaye. Then give him what he wants in the midfield area. Summer, Yeah, then but we can say United actually need a midfielder right away. that's what I said. Right away, Midfielder है ही नहीं yes. उनके पास. Agree. Winter transfer में you have to go for a midfielder, whether it's Baleba, whether it's Wharton, whether it's Anderson, which actually is very unlikely, knowing Nottingham Forest, नहीं नहीं वो देंगे नहीं ब्रो इन दिस सीजन because जो जैसा उनका चल रहा है Bruno Fernandes, let's be honest, is not the the Bruno same player Fernandes of 5 years ago. He has missed a lot of good chances, and even it for is because Portugal of bro. his, yeah, and it's because of his like dullness that United he missed two penalties. If only if he had scored those two penalties, United would actually, even with the loss of at Everton, would have m- made United in top three, top five. That's been the case with Bruno Fernandes as of now. Hmm. correct bro correct you are correct मतलब The क्या ही only बोलूं positive for United this season has been their three signings, new one, and Amad Diallo at the right and Delete at the centre back position. agree I agree that's a how यूनाइटेड के ऊपर भी अच्छी डिस्कशन हो सकती है पूरी अभी तक जो सीजन जा रहा है So कैसे before we जाएगा go, let's do a very early prediction. Your top three favorites for UCL. Arsenal definitely the way they are playing Mm-hmm, Bayern Munich those two are the obvious mm-hmm, actually PSG is mm-hmm. also a bit obvious but थर्ड स्पॉट में एज ए मतलब कैसे बोलूँ तुम्हें थर्ड स्पॉट मुझे लग रहा है Uh, कोई डार्क हॉर्स या फिर लाइक नॉट डार्क हॉर्स मतलब प्रीमियर लीग से ही कोई mm-hmm, आके ले लेगा ब्रो या सिटी हो सकती है वो चेल्सी हो सकती है टॉटनम mm-hmm. इफ दे डू I समथिंग don't क्रेजी see City doing it right now. City are struggling a lot. एग्जैक्टली बट कहना नहीं यूसीएल के लिए कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा ब्रो अपार्ट फ्रॉम दिस Of टॉप course, मैं like टॉप फोर बोल रहा हूँ टॉप फ्लोर में टॉप last year थ्री nobody even या like एग्जैक्टली last year nobody considered पीएसजी PSG in यस top five. वही वही केस है तो जो फॉर्मेट आया ना नया तो उसने ये सब चीज ला दिया कि तुम प्रिडिक्शन दे ही नहीं पाओगे until it is क्वार्टर फाइनल Mm, वही तो वही बात है सो आई थिंक वी आर डन राइट ब्रो so let's meet tomorrow again absolutely, let's see what match time surprises we get and indeed. let's see our Chelsea our topic our Chelsea in the title race let's see tomorrow so signing Let's out hope. have a Bye. good night everyone Good night.